So the poet says, up till now, the poet says that he imagines that the birches trees are bent downward because of the ice storm. Then he thinks that it may be possible that some boy has bent them while going in search of his cows in the woods, and then he imagines that a boy who is all alone in the forest, who cannot go to the town to learn baseball, he used to play on those birches, he used to climb up on those trees. He's talking about that he always kept his poise to the top branches, climbing carefully with the same pains you used to fill a cup up to the brim and even above the brim. Then he flung outward, feet first, with a swish, kicking his way down through the air to the ground. अब पोइट बता रहा है कि जब वो नीचे उतरता है बच्चा, तो वो क्या करता है, देन ही फ्लंग आउटवर्ड फीट फर्स्ट, वो उछलकर सबसे पहले अपने पैर जमीन पर टिकाता है और फिर विद अ स्विश, बिल्कुल झटके से डाली को छोड़ देता है और अपना रास्ता बना लेता है हवा से होता हुआ ज़मीन पर. सो ही सेज दैट he took no time in getting down from the tree to the ground. This is the way he comes down from the tree. So was I once myself a swinger of birches, so I dream of going back to be. The poet recalls that I was myself a swinger of birches. He is a lover of nature. The poet Robert Frost is a lover of nature. He finds joys in the simple activities among the nature. He finds joy in all these simple activities. So he imagines, or he recalls, that I was myself a swinger of birches, and so I dream of going back to be. And he says that he is dreaming of going to be a swinger once again in the later part of his life. It's when I am weary of considerations and life is too much like a pathless woods. So considerations means worries and problems of life. Weary, weary, weary means thaka hua, tired. It's when I am weary of considerations and life is too much like a pathless woods, where your face burns and tickles with the cobwebs broken across it, and one eye is weeping from a twigs having lashed across it open. So these 4 lines are very important. The poet dreamed of going back to his childhood days when he used to play on the branches of the birches tree, and he is stating in these next 4 lines that what time he craved to be a boy or a child. So it is the time when I am weary of consideration. पोइट ऐसा कहते हैं कि वो फिर से स्विंगर ऑफ ब्रिचेस बनना चाहते हैं और उनका मन करता है कि वो जीवन में पीछे की ओर चले जाएं. और कब उनका मन ऐसा करता है, व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसीडरेशन. वेरी थका हुआ, कंसीडरेशंस चिंताएं, जब वो जीवन की चिंताओं से, परेशानियों से थक जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा ये चिंता उन्हें घेर लेती है. एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक अ पाथलेस वुड. और जीवन ऐसा लगता है जैसे कि एक ऐसा जंगल है जिसमें कोई रास्ता बाहर निकलने का उन्हें नहीं मिल रहा है. So here life is compared with a pathless woods, with a forest. Life is compared with a forest. So this is a simile. Where your face burns with and tickle with the cobwebs. और जो जंगल है उसकी गर्मी में आप परेशान हो रहे हो और उसमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, और ब्रोकन अक्रॉस विद द cobwebs, ब्रोकन अक्रॉस इट, चारों तरफ घोर अंधेरा है, जाले वाले लगे हुए हैं. वन आई इज़ वीपिंग फ्रॉम अ ट्विग्स हैविंग लेस्ड अक्रॉस इट ओपन.
और कोई टहनी आपकी आँख में लग गई है जिसके कारण आपकी आँख में आंसू आ रहा है। सो कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम लाइफ में हो गई है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो। तो ऐसे समय में कवि को लगता है कि मैं अपने पुराने दिनों में लौट जाऊं, ऐसे बचपन के दिनों में लौट जाऊं जहां पे मैं बिल्कुल बच्चों की तरह मैं रहता था और आराम से जंगल में खेलता था। सो twigs having lashed across it open when someone disillusioned with this world and face the harsh reality of life, जब जीवन की कठिनतम सच्चाइयों से हमारा सामना होता है उस समय ऐसा लगता है, ऐसा कवि मानते हैं कि उस समय हमें लगता है कि हम वापस अपने उसी जीवन में लौट जाएं, बचपन वाले में। सो द पोइट सेज दैट द पोइट विश्ड टू बी अ swinger of birches again, and he feels this thing very much when I am weary of consideration, when he got tired with worries and problems of life, and life appears to be a forest in which he is standing somewhere puzzled and he is not finding the way to get out of that forest, where your face burns and tickle with the cobwebs, and his face is burning. So he is very much tired and perplexed with the worries of life, and broken and problems are surrounding you. This is the time when he is surrounded by the problems of life, and one eye is weeping from a twigs having lashed across it open, and he became disillusioned with he is disillusioned about this world. All the harsh and bitter realities of his life are in front of him, are before him, and he is very much not able to cope up with those situations of life. I would like to get away from earth a while and then come back to it and begin over. So he says that at the time of the problems of life, when life is full of problems, he thinks that may God make it possible for me to get away from this earth for a while and then come back on the earth again and begin the life as a new begin it over. So कभी कभी उनको लगता है कि काश ऐसा हो पाता कि मैं थोड़ी सी देर के लिए धरती से चला जाता और वापस आ जाता और जीवन की फिर से शुरुआत कर पाता. So in order to avoid the problems of life, he thinks that may it would be possible to go away from this earth for a while and then come back on this earth and start the life again. May no fate willfully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away not to return. So but then there was a fear. लेकिन इसके साथ एक डर भी है. उनको लगता है कि फेट मतलब भाग्य, कि ऐसा ना हो कि भाग्य मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड कर ले, गलत समझ ले और मेरी जो विश है हाफ ग्रांट हो, आधी ही मिले. आई विश एंड स्नैच मी अवे नॉट टू रिटर्न. ऐसा ना हो कि मैं चला तो जाऊं लेकिन वापस ना आऊं. सो ही इज रिजेक्टिंग द फर्स्ट, ही थिंक्स ऑफ दिस आइडिया दैट ही कैन go away from this earth for a while, but in the next lines he rejects the idea. कवि एक बार तो सोचता है कि मैं जाके वापस आ जाऊं, जब परेशानियां हों तो थोड़ी देर के लिए धरती से चला जाऊं, वापस आ जाऊं, लेकिन फिर अगली ही 2-3 लाइनों में वो इस बात को कहते हैं कि नहीं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है. दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फेट मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड कर ले और मैं चला तो जाऊं लेकिन वापस नहीं आ पाऊं, और अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो मेरा जीवन तो ख़त्म हो जाएगा. सो ही सेज may no fate willfully misunderstand me. He prays to the God that fate should not misunderstand his wish and should not grant his wish half. It may be possible that he may go away from the earth, but
it may also be possible that he will not return on the earth again. Earth is the right place for love. And then he says that in spite of all the worries, all the problems and anxieties of life, this earth is the right place to live and love. तो इतनी बातें कहने के बाद पोइट ये कहते हैं कि अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, कि चाहे कितनी भी परेशानियां हों, चाहे हम ऐसा सोच लें कि परेशानियों के वक्त हम इस जीवन को छोड़ जाएं, फिर वापस आ जाएं, फिर जी लें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप वापस चले जाएं, लेकिन फिर अगर आना नहीं हुआ तो बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि लाइफ इज़ बेटर देन डेथ, लाइफ इज़ बेटर देन हेवन, लाइफ ऑन अर्थ इज़ मच मोर ब्यूटिफुल देन लाइफ इन हेवन। मतलब मृत्यु के बाद का जो जीवन है उससे ज़्यादा अच्छा जीवन इस धरती का जीवन है। ये धरती ही सबसे अच्छी जगह है जीवन को जीने के लिए और प्रेम करने के लिए। सो ही सेज दैट दिस अर्थ इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस to live and to love. So life is more beautiful and good, and it is more desirable than heaven. So the act of swinging on bridges is presented as a way to escape the harsh realities of life or the truth of adult world, if only for a moment. Not for lifetime, but only for a moment. I don't know where it's likely to go better. I would like to go by climbing a birch tree and climb black branches up a snow white trunk towards heaven till the tree could bear no more, but dipped its top and set me down again. That would be good both going and coming back. One could do worse than be a swinger of birches. So the poet says that this life is worth living. This life is, in spite of all the harsh realities of life, this life is worth living. And this earth is the most beautiful place to live. And climbing of birches may be an escape from the harsh realities of life for a moment, but everyone has to come back and everyone has to live his own life. So I don't know where it's likely to go better. I would like to go by climbing a birch tree. And he says that I don't know where it's likely to go better, कि जब परेशानियां हों तो मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना चाहिए, but I would like to go by climbing a birch tree. पर मैं क्या करूँगा कि in order to escape from those harsh and bitter worries of life, I would like to spend my time in climbing birches tree and climb black branches up a snow white trunk towards heaven till the tree could bear no more, but dipped its top and set me down again. And he says that I might even go as far as the snow white trunk towards heaven, but not further. And I wish that after this the tree might become unable to take me any further, so I might be brought down. And that would be good both going and coming back. Such a thing would be good both going and coming back. One could do worse if one did not like to become a swinger of the birches. So this is the best thing, to be a swinger of birches in order to escape for a moment. मतलब कि हम जीवन की परेशानियों से कुछ क्षण के लिए अगर दूर होना चाहते हैं तो हम अपने आप को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लें जो हमें अच्छी लगें और जो हमें, जैसा कि वो कहते हैं, दैट कुड बी टूवर्ड्स हेवन, कि वो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमें ऐसा लगे कि हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, किंतु पूरी तरह भी नहीं जाना है, हमें वापस आना है। मतलब उन सब चीज़ों से लड़ने की हमें ताकत मिल जाए, हमारा दिमाग थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इसलिए हम इस तरह की एक्टिविटीज़ को फॉलो कर सकते हैं जिनसे हमारा दिमाग या ध्यान बढ़ जाए, लेकिन हमें फिर से वहीं आना है इस धरती पर जहाँ हमें अपना जीवन बिताना है। तो इसलिए
वो कहते हैं कि सबसे अच्छी एक्टिविटी जो वो सोचते हैं कि जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में हम अपने आप को मन बहलाने के लिए बिरचेस के पेड़ों पर चढ़ना. सो बिर्च ट्री इज अ सिंबल ऑफ solace. So birches represents these solace, or they represent the nature, because he is a nature lover. So we can say that when someone, or when a human being is tired of the worries and problems of his life, he should go back to nature, enjoy in the lap of nature, and seek the pleasure, that heavenly pleasure among the natural objects. And after having that pleasure and solace, he could return to his life again. So it is the most suitable thing for everyone, according to the poet. So this is the end of the poem. I will share all the PDF notes with you.